Good morning students, and again welcome to our economics class. We will continue our topic price elasticity of demand. In the last class yesterday we studied about meaning of price elasticity of demand and its two degrees, perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand. And we know that both are the imaginary conditions. In the case of perfectly elastic demand, when a consumer can demand any amount of the commodity at the given price, and with slightly change in price, the demand will change infinite. It's perfectly elastic demand. EP equal infinite, and the demand curve is horizontal line parallel to the x-axis. Actually हमने और पढ़ा था perfectly inelastic demand. In the case of perfectly inelastic demand, there is no change in demand with the change in price. Either price increase or decrease, the demand remain constant, and the demand curve is vertical line parallel to the x-axis. Sorry, parallel to the y-axis. Now in today's class we study three remaining degrees of price elasticity of demand. It's highly elastic demand, less elastic demand, and unitary elastic demand. What are their meaning, their schedule, and their explanation with the help of diagram? First we take highly elastic demand, EP greater than 1. Highly elastic demand means when more change in demand of the commodity is the percentage change in price of the commodity, it is highly elastic demand. जब किसी commodity की demand में उसके price के comparatively ज़्यादा change होता है, it is the highly elastic demand. एक चीज याद रखने वाली बात, हमें क्या बात कर रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जब किसी कमोडिटी की डिमांड में उसकी प्राइस के कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज होता है, इट इज द हाईली इलास्टिक डिमांड. हमें इसको शेड्यूल से देखते हैं. सपोज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 20 रुपीज एंड इट्स डिमांड इज 100 यूनिट्स. प्राइस कितना है? 20 और डिमांड कितना है? 100 यूनिट्स. व्हेन प्राइस फॉल्स टू 10 रुपीज एंड डिमांड राइज 100 टू 200 यूनिट्स. अगर हम दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी करें तो प्राइस 20 से 10 हुआ, कितना रिड्यूस हुआ? 50%. डिमांड 100 से 200 हो गया, डबल हो गया. डिमांड कितना इंक्रीज हुआ? 100%. सो इट मींस मोर चेंज इन डिमांड एंड लेस चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. आपको दोनों का परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना है कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है और डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है. हम कंपैरिजन करें दोनों का, प्राइस में चेंज हो रहा है 50%, डिमांड में चेंज हो रहा है 100%. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इट इज अ हाईली इलास्टिक डिमांड, एंड इन दैट केस द डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर and the change in demand, it means delta Q, is more than the change in price delta P. Let's see with the help of diagram. In this diagram, DD is the demand curve which is more flatter. अब देखिए जो डिमांड कर्व हमने बनाया है वो कैसा है? मोर फ्लैटर. अगर आप इसको स्टीपर कर देंगे या लेस फ्लैटर कर देंगे तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा. तो आपको बनाते टाइम में ध्यान रखना है, मस्ट बी मोर फ्लैटर. When price is OP, its demand is OQ. When price falls OP to OP1, the demand rise OQ to OQ1. अगर हम कंपैरिजन करें, प्राइस कम हो रहा है OP से OP1 और डिमांड इंक्रीज हो रहा है OQ से OQ1. So change in demand is more than the change in price of the commodity. अब ध्यान से देखेंगे प्राइस में जो चेंज हो रहा है P से P1 मतलब डेल्टा P वो कम है, और जो डिमांड में चेंज हो रहा है Q से डेल्टा Q से Q1 it's more. So the change in demand of the commodity is more than the change in price of the commodity. So it is a highly elastic demand. I repeat again, we measure this change in the percentage terms. So in this case, delta P is less than delta Q, or more change in demand than change in price of the commodity. It is the highly elastic demand. The second condition is the less elastic demand और inelastic डिमांड भी हम इसको बोलते हैं. इन दैट केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. किसी कमोडिटी की प्राइस में जो चेंज होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा और जो डिमांड में चेंज होगा वो कम होगा.
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों का जो चेंजेस का मेजरमेंट कर रहे हैं वो हम परसेंटेज टर्म्स में या प्रोपोर्शनल टर्म्स में लेते हैं. So when percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price of the commodity, it is less elastic और inelastic demand. जो प्राइस का चेंजेस है वो तो ज्यादा होगा और जो डिमांड का चेंजेस है वो कम होगा. And it's generally in the case of necessities or essential or life saving goods of the commodity or even for the prestigious goods. Now we see it with the help of diagram. In the given diagram, price of a commodity decrease from 20 to 10 rupees. Price कितना हो गया 20 to 10 rupees and demand rise 100 to 150 units. Price 20 से 10 हो गया, डिमांड कितना इंक्रीज हुआ हमारा 100 से 150. अगर कंपैरिजन करें तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी. सो इन दैट केस price elasticity of demand is less elastic. Now we see it with the help of diagram. In the given diagram, DD is the demand curve. When the price of the commodity is OP, its demand OQ. जब प्राइस कितना इसका OP और डिमांड कितना हमारा OQ. When price falls OP to OP1, its demand rise OQ to OQ1. If we compare both, change in price is more than the change in demand of the commodity. प्राइस ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए प्राइस 100%, प्राइस मान लीजिए 50% डिक्रीज हुआ और जो डिमांड राइज हुआ हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया वो 25% ही राइज हुआ. तो जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो प्राइस के कंपैरेटिवली कम हो रहा है. तो यहाँ पर हम जो बात करें डेल्टा पी इज मोर देन द डेल्टा क्यू. चेंज इन प्राइस इज ऑलवेज मोर देन द चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन द केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड or inelastic demand, and the demand curve is less flatter or steeper in the case of less elastic demand, जिसको inelastic demand भी बोलते हैं. यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइस में चेंजेस है वो तो ज्यादा होगा और जो डिमांड में चेंजेस है वो कम होगा. And last degree of price elasticity of demand is unitary elastic demand. In the case of unitary elastic demand, change in price of the commodity and change in demand of the commodity both are equal. जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसके कंपैरेटिवली जो डिमांड में चेंज होगा दोनों इक्वल होंगे. अगर हम डायग्राम की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस में चेंज कितना हो रहा है हमारा 20 to 10 50% और डिमांड में कितना चेंज हो रहा है 100 to 150 50%. सो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस बोथ आर इक्वल. प्राइस में भी कितना चेंज हुआ 50% और डिमांड में भी कितना चेंज हुआ 50%. So the percentage change in quantity demanded and the percentage change in price both are equal. It is the condition of unitary elastic demand. किसकी सिचुएशन हमारे लिए unitary elastic demand. यहाँ पर percentage change in quantity demanded और percentage change in price हुए वो दोनों हमारे लिए equal होंगे. And the demand curve in that case is rectangular hyperbola. जो डिमांड कर्व हमारा बनता है एक्चुअली में कैसा बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. For the simplicity, we take straight line demand curve. In the given demand curve, price of the commodity is OP and its demand is OQ. When price falls OP to OP1, its demand rise OQ to OQ1. जब प्राइस फॉल हो रहा है इसका OP से OP1 तो इसका डिमांड राइज हो रहा है OQ से OQ1. तो जितना प्राइस में फॉल होगा डिमांड में राइज भी उतना ही होगा बिकॉज इट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू बोथ आर इक्वल. तो अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना चेंज हो रहा है 50% दोनों में. इट्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. सो इन द शॉर्ट वी रिवाइज ऑल थ्री कंडीशन. फर्स्ट इज हाईली इलास्टिक डिमांड. इन दैट केस परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में कितना चेंज हुआ 50%, demand will change 100%, and the delta Q is greater than the delta P, and the demand curve is more flatter in the case of highly elastic demand. Second is less elastic demand. In the case of less elastic demand, change in price is more than the change in demand of the commodity. If we see on the board, price change हो रहा है हमारा 50% और demand increase हो रहा है हमारा 25%. So percentage change in price is more than the percentage change in demand of the commodity. In that case, delta P is greater than delta Q. And the third is unitary elastic demand.
In the case of unit elastic demand, percentage change in price and percentage change in demand both are equal, both are 50%, and delta P and delta Q both are equal, and the demand, in this case, the demand curve is rectangular hyperbola. So these are the 5 degrees of price elasticity of demand: perfectly elastic and perfectly inelastic, which we studied yesterday. Then highly elastic demand, less elastic demand, and unit elastic demand, which we studied today. In the next class, we study measurement of price elasticity of demand and the different factors which affect the price elasticity of demand. Thank you.